Introduction to nervous system. In this chapter, we'll go through an overview of what the nervous system is, what its components are, what are the cells of the nervous system, and then later on we'll discuss each of them in detail in the later chapters. So let's move on with it. The structural division of nervous system. स्ट्रक्चरली नर्वस सिस्टम हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे पास नर्व्स ऑरिजिनेट हो रही होती हैं, दैट फॉर्म्स आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा मेन सेंटर है जहाँ पे हमारे पास हमारी बॉडी से जितनी भी सेंसरी सेंसेशंस आ रही होती हैं that are regulated and related with our past memory. हमारी बॉडी में जितने भी स्टिमुलस, जितनी भी सेंसरी सेंसेशंस हमारे ऑर्गन से, हमारे स्केलेटल मसल से, जॉइंट से, विजुअल स्टिमुलेशंस, ऑडिटरी स्टिमुलेशंस, वो सारे स्टिमुलेशंस हमारे पास, वो सारी सेंसेशंस हमारे पास ब्रेन में आती हैं, and that are regulated and correlated with our past information stored in our brain. हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है इज़ कवर्ड बाय सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन नोन एज मेनिंजीज. मेनिंजीज की 3 लेयर्स होती हैं. फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर अगर हम मूव करें, सो द फर्स्ट लेयर इज़ द ड्यूरा मैटर, सेकेंड कम्स द एरेक्नॉइड मैटर एंड द लास्ट वन द पाया मैटर. ड्यूरा मैटर की भी हमारे पास फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, द एंडोस्टियल लेयर एंड द मेनिंजियल लेयर. The endosteal layer is along the skull bone. और एट फोरामिन मैग्नम हमारे पास जो एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर होती है वो फ्यूज हो जाती है एंड इट डज नॉट कंटिन्यू विद द स्पाइनल कॉर्ड. ओनली द मेनिंजियल लेयर of dura mater is present in spinal cord. बिटवीन द एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर हमारे पास एक स्पेस प्रेजेंट होती है नोन एज द सब एरेक्नॉइड स्पेस दैट कंटेन द cerebrospinal fluid CSF that provides additional protection to our central nervous system, nutrition, and it also reduces the weight of our brain. Moving on to the peripheral nervous system. So what is peripheral nervous system? The nerves arising from central nervous system, brain and spinal cord forms our peripheral nervous system. The peripheral nervous system has further 2 divisions, the autonomic and the somatic division. What does autonomic and somatic means? सोमैटिक सेंसेशंस क्या होती हैं? हमारे पास हमारी स्किन से और लोकोमोटर सिस्टम से दैट कंसिस्ट ऑफ आवर जॉइंट, locomotor system that consists of our joints, ligaments, skeletal muscles, इन सब से जो सेंसेशंस आ रही होती हैं दैट फॉर्म्स आर सोमैटिक सेंसेशन. और जो नर्वस सिस्टम इन सेंसेशंस को रेगुलेट कर रहा होता है दैट इज़ नोन एज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम. इट इज़ वॉलंटरी. The autonomic nervous system is the involuntary. It is of further 2 types, the parasympathetic and sympathetic. The sympathetic nervous system is activated in an emergency or fight or flight state. And the parasympathetic nervous system aims for conserving and restoring our energy and is activated at the rest state. नर्वस सिस्टम की सेल्स की बात करें तो हमारे पास नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, द न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स. द न्यूरॉन्स आर द मेन फंक्शनल सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इम्पल्सेस. द न्यूरोग्लियल सेल्स सपोर्ट्स द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स. नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, द न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोग्लियल सेल. द न्यूरॉन्स आर द मेन फंक्शनल सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इम्पल्सेस, कंडक्शन ऑफ impulses.
And the neuroglial cells are the supporting cells of nervous system that supports the function of the neurons. Neuroglial cells further 4 types के होते हैं, that are the oligodendrocytes, epididymal cells, astrocytes, microglial cells. Oligodendrocytes form the myelin sheet of neurons. Peripheral nervous system के जो neuroglial cells होते हैं, that are the satellite cells and the Schwann cells. Schwann cells जो होते हैं are similar in functionally with the astrocytes. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम हमारे पास 2 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज हुआ होता है, द ग्रे मैटर एंड द वाइट मैटर. व्हाट इज़ ग्रे मैटर एंड व्हाट इज़ वाइट मैटर? अगर हम न्यूरॉन को देखें तो न्यूरॉन के हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं, द डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, सेल बॉडी ऑल्सो नोन एज सोमा, द एक्सॉन टर्मिनल एंड द एक्सॉन हिलिक. द जहाँ से हमारे पास सेल एक्सॉन स्टार्ट हो रहा होता है, ये एरिया हमारे पास इज़ नोन एज द एक्सॉन हिलिक. यहाँ पर हमारे पास सोडियम चैनल्स हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द एक्शन पोटेंशियल डाउन द होल लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड ट्रांसमिटिंग द नर्व इम्पल्स टू द other synaptic axon, other synaptic neuron. So gray matter comprises of the cell body and the unmyelinated axon. जिस एक्सॉन पे हमारे पास माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगी, that would be the part of our gray matter. And the myelinated axon, myelin sheet जिस पे present होगी, that forms our white matter. Gray matter comprises of cell bodies and the unmyelinated axon fiber, whereas the white matter comprises of the myelinated nerve fiber, axon fiber. The white matter appear whites due to the presence of lipid that forms the myelin sheet. ग्रे मैटर हमारे पास ब्रेन में जो होता है आउटर प्रेजेंट होता है, वे एज इन स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड. ब्रेन में ग्रे मैटर की जो अरेंजमेंट होती है, एट द सरफेस हमारे पास जो ब्रेन में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, एट द सरफेस जो होता है इट इज़ नोन एज द कॉर्टेक्स. वेयर इज डीप इन द सेरेब्रम जो हमारे पास जो न्यूक्लियस हमारे पास ब्रेन पीसेस ऑफ ग्रे मैटर जो हमारे पास डीपली प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज द न्यूक्लियस. What are nucleus? Part of gray matter embedded in central nervous system within the white matter. यहाँ से न्यूक्लियस से हमारे पास नर्व्स ऑरिजिनेट हो रही होती हैं, एंड डीप विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं आर नोन एज द बेसल न्यूक्लिया. द वाइट मैटर्स फॉर्म आर ट्रैक्स, द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स. What are tracks? These are bundles of nerve fibers. What are nerve fibers? The myelinated axon fibers. Myelinated axons. Peripheral nervous system में हमारे पास gray matter is known as ganglia, and the white matter forms nerve. फंक्शनल डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम. अगर हम नर्वस सिस्टम को फंक्शनली डिवाइड करें तो आप फंक्शनली द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द सेंसरी एफरेंट डिवीजन एंड द मोटर एफरेंट डिवीजन. हमारे पास बॉडी से जो भी स्टिमुलस सेंसेशंस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही होती हैं, दैट फॉर्म्स आर सेंसरी एफरेंट डिवीजन. और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे पास नर्व फाइबर्स अराइज हो रहे होते हैं एंड इनर्वेट द रिस्पेक्टिव ऑर्गन और स्ट्रक्चर, दैट फॉर्म्स आर द मोटर एफरेंट डिविजन्स. द सेंसरी डिविजन्स comprises of receptors, example such as baroreceptors present in our vasculature, mechanoreceptors
that sense the pressure and vibrations, the chemical receptors, etc. Sensory or afferent division is further divided into the visceral sensory and somatic sensory. What does viscera mean? It विजरा का मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स. तो हमारे पास जितने भी हमारे ऑर्गन से जो भी सेंसेशंस आ रही होती हैं, दैट आर दी विजरल सेंसरी sensations from the blood vessels and the viscera. The sensations include temperature and stretch. जब भी हमारे पास हमारा हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो द स्ट्रेच ऑफ द कार्डिक वॉल, द स्ट्रेच ऑफ द GIT tract while digestion, the peristaltic movements, the stretch of our stomach wall when food enters, ये सारी sensations कौन सी होती हैं? Visceral sensory sensations. What are somatic sensory sensations? हमारी स्किन और लोकोमोटर सिस्टम से जो भी sensations आ रही होती हैं, that are the somatic sensory sensations. It is voluntary. They are of two types, the general somatic sensations and the special somatic sensations. These general somatic sensations are the localized sensations. Localized sensation that can be felt throughout out our whole body, such as touch, pain, pressure, vibration, temperature, and proprioception. What is proprioception? Proprioception. All sensations coming from locomotor systems are collectively known as proprioception. It is the sense of position. The 3D arrangement or arrangement or position of our joints, tendons, ligaments, and muscle in space is known as the proprioception. What are special somatic sensations? हमारे पास रिस्पेक्टिव ऑर्गन से, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से जो सेंसेशंस आ रही होती हैं, दैट आर दी स्पेशल सोमैटिक सेंसेस, सच एज टेस्ट फ्रॉम आवर टंग, स्मेल, nose, hearing from ear, vision, eyes, balance from the vestibular system. मोटर इफरेंट डिवीजन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे पास नर्व फाइबर्स अराइज हो रहे थे, दैट फॉर्म्स आर दी मोटर efferent division. Sends motor informations to effector organs. It is of further two types, the somatic motor and the autonomic motor. The somatic motor is voluntary as it innervates our skeletal muscles, and the autonomic motor is involuntary. It innervates our smooth muscles, cardiac muscles, and glands. The special senses, the sense of smell, vision, balance, hearing, taste. The general senses visceral, and the somatic sensation, the visceral sensations from our organs, stomach, heart, lungs, and the somatic sensations from skin, our tendons, ligaments, and our skeletal muscles. Major divisions of nervous system. Nervous system की major division की बात करें तो it comprises of spinal cord and the brain. We'll now go through an overview of the spinal cord and the brain, and in the later on chapters we'll discuss them briefly. So now let's start with spinal cord. Spinal cord में जो हमारा gray matter होता है, it is present inside and the white matter surrounds it. The gray matter comprises of three horns, the dorsal or posterior gray horn, ventral or anterior gray horn, and the lateral horn, which is observed at certain vertebral levels. The white matter also comprises of three columns, the posterior or dorsal column, the ventral or anterior column, and the lateral white column.
Within the gray matter, a canal is also present known as the central canal that contains the cerebrospinal fluid. From the dorsal gray horn, the dorsal root or sensory root arises, and from the ventral horn, the ventral or motor root arises. It consists of afferent fibers, and the ventral root consists of efferent fibers. वो फाइबर्स जो हमारे पास बॉडी से नर्वस सिस्टम तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसेशन लेकर आ रहे हैं, दैट आर नोन एज दी एफेरेंट फाइबर्स, एंड दैट फॉर्म्स आर डॉर्सल और सेंसरी रूट. And there are fibers arising from the spinal cord and going to our body structures, that are the efferent fibers, which forms our ventral or motor root. Within the spinal nerve, both the sensory and motor fibers are present, that is, it consists of both afferent and efferent fibers. At the dorsal root, a ganglia is observed known as the dorsal root ganglia that contain cell bodies. The spinal nerve, upon forming, divides into two ramuses, the posterior ramus and the anterior ramus. The anterior ramus innervates our anterolateral abdominal wall, that is the axial musculature, and limbs, and the posterior ramus innervates the muscle and skin of back. The spinal cord is situated within the vertebral column. The spinal cord starts from the lower border of medulla. Here it is a, you can see it is our brain, the cerebrum. Lower to cerebrum is present midbrain, pons in the medulla. At the lower border of medulla, the spinal cord begins and it extends up to its terminal end at the level of L1 to L2, known as the conus medullaris. What is conus medullaris? It is the conical shaped terminal end of spinal cord. From the conus nerve fiber arises that innervates our lower musculature and the pelvic viscera. This bundle of nerve fiber is known as cauda equina. Giving a horse tail appearance. Innervating consists of sensory and motor innervations, provide innervation to lower limbs, pelvis, and the perineum. If it is damaged by any trauma or injury, the lower body function is disrupted. You can feel back pain, weakness in limbs, bladder and bowel dysfunction, sudden anesthesia. At the conus medullaris, although the spinal cords end at the level of L1 to L2, while the pia mater of the spinal cord, which is the innermost meningeal layer extends and attached to the back of the coccyx. This extension of pia mater is known as the filum terminalis. We'll see it in a diagram also. There are 31 pairs of spinal cord nerves, 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, and 1 coccygeal. Note that although there are 7 cervical vertebrae, there are 8 cervical nerves and 4 coccygeal vertebrae, but only 1 coccygeal nerve. As you can see here in the diagram, the gray matter of the spinal cord, the dorsal root, and the ventral gray horn. The gray matter comprising of the central canal containing the CSF, the white matter present outside. From the dorsal gray horn arises the dorsal root, and from the ventral gray horn arises the ventral root. Both of them combines to form the spinal nerve. The spinal nerve then divides into the posterior ramus
and the anterior ramus. Note that the spinal nerve consists of both afferent and efferent fiber. That is, both sensory and motor fibers are present within the spinal nerve. Upon seeing the transverse section, you can observe a sulcus present at the posterior end of the spinal cord known as the posterior median sulcus and a fissure present anteriorly known as the anterior median fissure. Here you can observe the three meningeal layers of the spinal cord, the dura mater, arachnoid mater, the innermost pia mater. ड्यूरा मैटर की कौन सी लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है? दी मेनिंजियल लेयर. The gray matter of spinal cord, the dorsal gray horn, ventral gray horn. From the ventral gray horn arises the ventral root. From the dorsal gray horn arises the dorsal root. The dorsal root ganglion. Both of them combines to form the spinal nerve, which divides into anterior ramus and the posterior ramus. Within the gray matter present the central canal. The spinal cord beginning from the lower end of the medulla oblongata and extending up to the level of L1 or L2. And the end where it terminates, where the spinal cord terminates, is known as the conus medullaris. From the conus medullaris, nerve fibers arises giving a horse-tail appearance known as the cauda equina. Although the spinal cord ends at the level of L1 to L2, its meningeal layer, that is the pia mater, extend up to the end and get attached to the back of coccyx known as the filum terminalis. Now let's talk about ganglia. What are ganglia? These are the collection of nerve cell bodies outside the central nervous system. These are of two types, sensory और autonomic ganglia. सेंसरी गैंग्लियाज हमारे पास एफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी करते हैं. हमारे पास पेरिफ्री से ब्रेन की तरफ जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसके दरमियान जो हमारे पास गैंग्लियाज फॉर्म हो रहे होते हैं, दैट आर नोन एज दी सेंसरी गैंग्लियाज एंड दीज कैरी द एफरेंट नर्व फाइबर्स. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन observed as the fusiform swelling on the posterior root of spinal nerve and the sensory ganglia of cranial nerve. Along the course of cranial nerve 5, the trigeminal nerve, the 7th cranial nerve, the facial nerve, 8th cranial nerve, 9th and the 10th cranial nerve. The posterior root ganglia carry sensations such as pain, temperature, and touch to the spinal cord. And from here, these sensations are transmitted by ascending tracts to brain. The sensory ganglia of cranial nerves carry visceral, somatic, or special sensations Now let's talk about the autonomic ganglia. These are present along the course of efferent nerve fiber. Here, the presynaptic and the postsynaptic neurons interact with each other. They are of further two types, the sympathetic ganglia and the parasympathetic ganglia. The sympathetic ganglia are present around the root of great vessel arteries and within the wall of viscera. Moving on to the brain consists of three parts, the forebrain, midbrain, and the hindbrain. The forebrain comprises of cerebrum. It is also known as prosencephalon. The superficial part of cerebrum is known as telencephalon, whereas the deep part of cerebrum is known as diencephalon. Structure within the telencephalon are the cerebral hemisphere, basal ganglia, and the hippocampus. The diencephalon consists of the thalamus,
hypothalamus and the cavity of third ventricle and the interventricular foramen, which forms the CSF, which can the production of CSFs, the cerebrospinal fluid, occurs here within the ventricles. The midbrain, also known as mesencephalon, the hindbrains, the rhombencephalon, comprises of medulla oblongata, pons, and the cerebellum. We'll discuss each of the part of the brain in detail in the later on chapters. From the brain, 12 pair of cranial nerves arises. As you can see here in the diagram, the forebrain formed by cerebrum, the midbrain and the hindbrain formed by the pons, medulla oblongata, and the cerebellum. From the lower border of medulla oblongata, the spinal cord arises, which extend up to the level of L1 to L2, and the terminal end of spinal cord is known as conus medullaris. From conus medullaris, the horse-tail extension of nerve fibers arises, known as the cauda equina. From the although the spinal cords end at the level of L1 to L2, the pia mater of spinal cord extend up to the coccyx and gets attached at the back of it. That extension of pia mater is known as filum terminalis. Now moving on to getting an overview of the development of nervous system. Our nervous system, central nervous system originates from the neural tube, which is formed by ectoderm, the three germinal layers, endoderm, innermore, mesoderm, and the ectoderm. The ectoderm forms our neural tube, which develops into our central nervous system, the brain, and the spinal cord. The cephalic end of the neural tube proliferate and give rise to three primary vesicles, which forms our brain. The forebrain vesicles form arteriocephalon and diencephalon. The midbrain vesicle form our tectum, tegmentum, and crus cerebri. The hindbrain vesicle form our hindbrain, consisting of pons, cerebellum, and the medulla oblongata. Surrounding the neural tube, some cells are present known as the neural crus cells that differentiate into the posterior root ganglia, sensory ganglia of cranial nerves, autonomic ganglia, melanocytes, and the cells of suprarenal gland. That's all about the first chapter of neuroanatomy.